Hello my dear students, welcome to all of you in today's class. Dear students, as you know that we have just started the chapter 2, nutrition in plant. In this chapters we have discussed about types of steps of nutrition which are involved in case of animals. So dear students, the first chapters is related to nutrition in plants, but chapter first is totally based on nutrition in animals. So we have to concentrate on nutrition in animals. So in my previous video you have seen the steps which are involved in nutrition in case of animals. So dear students, can you imagine the nutrition, the process which I have already discussed with you? There are so many steps. That is, the first step is ingestion. Ingestion means taking of food. In taking of food, so modes of taking foods, ways of taking food in different animals are different. We cannot say that each animals, each species perform the same types of ingestion ways in the same ways. So we can find different types of process of ingestion in different animals. So just I am talking about, if we take an example of a frog, how does the frog ingest? Okay, how does the frog carry out the process of ingestion? The process of ingestion in case of frog, the frog direct catches the insect directly inside the mouth with the help of the cavities present inside the frog. So if we talk about the amoeba as a unicellular organism, if we talk about the amoeba, in case of amoeba, ingestion can be seen, that ingestion process is carried out with the help of pseudopodia which is present in that. If we talk about the pseudopodia, pseudopodia is the false feet in case of amoeba, which in which the ingestion process can be proceeded. So dear students, I have talked different types of, just like you butterflies and bees. Butterflies sucks the nectar from the flowers. So with the help of the tubes, the longest tube present inside the insect, inside the butterfly. So butterfly uses during the sucking the nectar. So different animals and birds, you can find the different modes. If we talk about crow, तो crow has a long beak, चोंच उसका देखो ना बड़ा सा, तो crow has long beaks. Crow catches the insect and other things inside the beak. So therefore we have found many dissimilarities of ingestion in different animals. But if we talk about in case of animals and particularly human beings, so we found that the human digestive systems, there is a human digestive system. To being a human, let us know human digestive system. So today we will learn about the human digestive system. So human digestive system, there is a picture represented by human digestive systems which you can look here at the blackboard. This is the pictorial representation of human digestive system. Here we are looking that our ingestion process start from mouth. Ingestion process start from mouth, and there is a salivary glands. Okay, here is a salivary glands which is attached to the lower part of the mouth. So salivary glands releases secretes the saliva. So salivary glands releases saliva which intermingles the food into digestible and make the food digestible. Means जो food हम लोग लेते हैं, तो food already you know food is a complex material. Complex materials, it should be broken down into smaller pieces, into smaller fine pieces. So food can be broken down, and the digestion process start as you take food inside mouth. So mouth, there is a you can look here, the esophagus food pipe is attached to the mouth. There is a food pipe through which
due to the contraction and relaxation, the food enter inside the stomach through the esophagus food pipe. There is a esophagus food pipe through which the food enters into the stomach. And stomach, there is a stomach, you know, there is a stomach. You are looking here in the stomach. Stomach is a large bag, and there is a hydrochloric acid at the wall of the mucus. So hydrochloric acids releases, and the food is broken down into different parts, just like protein. As you know that there is a protein and carbohydrate, fats, etc. in the food. So food first of all comes to the stomach, and all of you know that the food remains churned. Churning process start inside the stomach, and the food remains in the stomach at least 3 hours. After the 3 hours, food passes through the small intestine. There is a small intestine. You are looking that this is the small intestine. This small intestine is 7.5 meter long. This is the round in shape. There is a rounding, bending, 7.5 meter long. So why it is called small intestine? Because it should be called as a large intestine. It is not called large intestine. There is a 7.5, having the 7.5 meter long length, but still it is called a small intestine because there is a narrow space present inside that. There is a narrow means बहुत constrict होता है inside the structure surface, due to which the intestine is called small intestine. तो small intestine में food आता है. अब यहाँ पे that is the important, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिडिक मीडियम में ही हमारा फूड जो होता है वो प्रोटीन जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन में ब्रेक हो सकता है. प्रोटीन जो फूड में प्रेजेंट है वो सेपरेट तभी होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा इन द एसिडिक मीडियम. तो फूड में यहाँ पे देख सकते हो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. मीन्स कंप्लीट डाइजेशन साइट अगर कहीं है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. You are looking here, small intestines is also attached with the pancreatic juice. Okay, there's a pancreatic juice. There are some bile juices also releases pancreatic juices. तो पैनक्रियास रिलीज होगा यहाँ से. पैनक्रियास क्या करता है, जो जूस होते हैं ये सब सारे जूसेस फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एट लास्ट द फूड कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड फिर कहाँ पे आएगा, लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा. तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में देखो सरफेस एरिया काफी बड़ा है. लार्ज इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है हमारा कंप्लीटली, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आकर के लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द फूड. सो फूड बिकम्स जस्ट लाइक पेस्ट एंड बिकम्स सॉलिड. तो फूड क्या कंप्लीटली क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, बिकॉज इट सक्स द वाटर, एब्जॉर्ब्स द वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड द सॉलिड वेस्ट इज रिलीज्ड, इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस व्हेन वी गो toilet, then waste solid is released. So there is a important thing is here. This is the liver. There is a liver. Liver is a gallbladder from where the bile juice is released. Gallbladder से क्या होता है, bile juice release होता है. ठीक है, यहाँ पे gallbladder है. gallbladder से यहाँ पे जो आपके liver में है, यहाँ से आपका bile juice release होता है. तो bile juice release होगा तो bile juice ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, इसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ग्लिसरॉल में. तो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फैट्स हमारा कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है और एट लास्ट द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड. सो हियर वी आर सीन दैट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एज यू आर लुकिंग दैट दिस इज द नेटवर्क ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स विच यू हैव सीन थ्रू दिस representation diagram, graphical representations
representation of human digestive systems which we have discussed here. So dear students, human digestive systems, this types of question often comes in examination, and you have to prepare which types of juice released with a from particular types of organ system. So all of you know it very well. I have described. अब यहाँ पे जो आप देखे हो कि स्टमक में जब HCl रिलीज होगा, HCl is the hydrochloric acid. All of you know that hydrochloric acid, all the acids is corrosive in nature. हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचर में क्या होता है? कोरोजन करता है, ठीक, कोरोड कर डालता है. तो फिर ये स्टमक कोरोड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें रिलीज हो रहा है, और एसिडिक मीडियम में ही हमारा फूड क्या होता है? वो ब्रेक्स डाउन होता है. एसिडिक मीडियम में ही फूड का आगे प्रोसीजर शुरू होगा, अदरवाइज नॉट. ओके, तो देयर इज अ प्रोटेक्टिव वॉल चेम्बर्स इनसाइड द स्टमक which protects mucus, which protects the stomach from being, डबल प्रोटेक्टेड लेयर होती है, यहाँ पे डबल प्रोटेक्टेड लेयर होती है which protects the acid which are released inside the stomach. स्टमक में जो रिलीज होता है तो हमारा स्टमक डबल प्रोटेक्टेड वाल से प्रोटेक्टेड होता है. नहीं इस तरह हो तो HCl रिलीज होगा तो बार बार तो हमारा जो स्टमक है इनसाइड द एब्डोमेन, ये तो फिर वो हो जाना चाहिए, कोरोजन हो जाना चाहिए. उसमें कोरोजन का मतलब होता है कि वो लीकेज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. HCl इज द, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? सभी ऑल द एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर. इनका नेचर में कोरोजन होता है. जैसे कहीं बॉडी में एसिड पड़ जाता है बॉडी में, तो तुरंत बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी ये तुरंत वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करते हैं. यानी ऑल एसिड्स आर कंसीडर्ड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो यहाँ पे जो एसिड रिलीज हो रहा है, दैट एसिड्स वर्क्स इन द सेम वे. नेक्स्ट वन मूव्स. डियर स्टूडेंट्स, I have explained the human digestive systems. I hope all of you have understood it clearly. So I hope all of you have got it clearly. Thank you. After that, if you have understood clearly the human digestive systems and the modes of nutrition and ways of ingestion in different animals, so if you want to find in detail, go through the book and learn it clearly. What are the different ways of ingestion in different animals? So work is given to you for next day. That work is associated with the content which are in your understanding. Homework. First is draw a neat and clean diagram of human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम तैयार करना है. नेम द डिशेस which are released by. Name the juices which are released by gallbladder. पैनक्रियास. पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है. पैनक्रियास थर्ड इज name the modes of nutrition, modes of ingestion
ingestion in case of frog, butterfly, snake. आपको क्या करना है, नेम द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन इन केस ऑफ फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्नेक. इसमें क्या करना है कि वो कैसे इंजेक्शन करते हैं. अमीबा भी ले लो यहाँ पे. वन एग्जांपल इज अमीबा आल्सो. अमीबा. तो आपको किसमें नेम द मोड्स और क्वेश्चंस. ड्रा द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रा करना है. नेम द जूसेस विच आर रिलीज्ड बाय गॉल ब्लैडर. ठीक है. पैनक्रियाज से कौन सा जूस रिलीज होगा. नेम द मोड्स ऑफ इंजेक्शन इन केस ऑफ फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्नेक, अमीबा. So you have to tell the modes of ingestion in that one. So do the homework in time. Take a screenshot of the homework that is given to you. Thank you students for watching this video.